Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. So today we'll be learning some words that start with the next letter of the alphabet that we have to cover today, and that is U. So in the last video we studied some words that start with the letter T, and today we are with a new letter today. And I hope you're excited to learn some words that start with the U. So if you're liking this series, you're learning something useful, I request you to please subscribe to the channel, share it with your friends so that we can maximize the reach and the learning, right? Now, without further ado, let's continue with the today's session. And today, the first word that we'll be learning is ubiquitous. Ubiquitous is an adjective, and it's a very common word that we have been hearing and using since our childhood, right? Ubiquitous simply means to be found everywhere. So something that is, reachable, or something which is found in almost every places can be referred as ubiquitous. So let's see an example that I have included for a better understanding is the use of smartphones has become ubiquitous in modern society, making it difficult to find someone without one, right? So सबके हाथ में आज फ़ोन है, right? Everybody has got a smartphone, be it people belonging to the remote section or rural section of the society or urban, any family member, any kid, everybody owns a smartphone today. So smartphone here has become, ubiquitous. It has been, we can find it everywhere now. So that's why the word is used here. Similarly, you can use it in different other sentences as well. तो अगर कुछ आपके दिमाग में भी आ रहा है तो you can just put it down in the comment section so that I can read it, right? Now, moving to the second word of today, and that is ulterior. Ulterior is again an adjective which means beyond what is stated or apparent, concealed, or something which is undisclosed. तो वो होता है ना, जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वही सच है, राइट? तो सम पीपल आर देयर जो बोलते कुछ हैं लेकिन उनके दिमाग में उनका मोटिव, उनका ऑब्जेक्टिव या एम कुछ अलग होता है जो छुपा हुआ होता है हमसे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टीरियर. ठीक है, समथिंग विच इज़ नॉट स्टेटेड इन फ्रंट ऑफ अस, समथिंग विच इज़ अनडिस्क्लोज्ड, बताया नहीं गया है या छिपाया गया है, समथिंग वी डोंट नो अबाउट, दैट इज़ अल्टीरियर. लेट्स इन एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को. सो ही प्रिटेंडेड टू बी हर फ्रेंड, राइट, बट हिज अल्टीरियर इंटेंशंस बिकेम ऑब्वियस व्हेन ही आस्क्ड फॉर अ लोन. सो देर आर सो मेनी केसेस अराउंड अस. ठीक है, हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ्स में भी बहुत चीज़ें होती है, लोग दोस्ती करते हैं एंड देर इज़ फ्रेंडशिप इज़ वन रीज़न, बट वो फ्रेंडशिप भी किसी दूसरे रीज़न, किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव से करते हैं, राइट? सो दैट अल्टीरियर एम और ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन जो हमें नहीं पता है, जो छिपा हुआ होता है, विच इज़ अनडिस्क्लोज, कैन बी रेफर्ड एज अल्टीरियर. ओके, आई होप यू गेट दिस वर्ड. मूविंग टू द थर्ड वर्ड ऑफ टुडे, एंड दैट इज़ अल्टीमेटम. अल्टीमेटम इज़ अ वर्ड जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज में भी. सो इट्स अ नाउन विच मीन्स अ लास्ट ऑफर और डिमांड, अ लास्ट वर्ड, एक फाइनल, एक कंक्लूजन, एक फाइनल स्टेटमेंट जब कोई बोलता है या देता है, दैट इज़ अल्टीमेटम. ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल, उसमें और अच्छा समझ में आएगा. फेस्ड विद एन अल्टीमेटम फ्रॉम हर बॉस, मारिया डिसाइडेड टू लीव हर जॉब रादर देन एक्सेप्ट अ डिमोशन. ठीक है, सो बॉस ने जो एक आखिरी स्टेटमेंट बोला होगा, राइट, कि यू आर नॉट बीइंग प्रमोटेड ड्यू टू दिस 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 इज रीज़न, एंड प्रमोशन तो छोड़ो, डिमोशन की बात आ गई है. सो दैट वॉज द अल्टीमेटम गिवन बाय हर बॉस कि अब चेंज नहीं हो सकता है, दिस इज़ द फाइनल थिंग. So then she decided that she'll leave her job, rather accept a demotion. So that final word, that final statement given by the boss, just because it was the final statement, it is referred as ultimatum. So ultimatum are the last words or the final words. Okay. Now, moving to the fourth word of today, and that is umbrage. Umbrage is a noun which means offense, suspicion of injury. Sometimes our friends, sometimes our parents, sometimes our relatives, sometimes our colleagues, anybody, कुछ कोई बोल देता है या किसी का कोई एक्शन ऐसा है जिससे हम बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं या बहुत अनॉयड फील करते हैं, दैट कैन बी टर्म्ड एज अम्ब्रेज. ओके, सो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड with respect to its meaning, but we don't generally use it or see it, but it can be asked in your exams, or maybe you could use it somewhere. So it's a very good word, and that is umbrage. And let's see the meaning, example of it. She took umbrage at his sarcastic remarks during the meeting, feeling deeply offended by his tone. So let's see, this is a case of an professional experience से ये sentence मैंने लिया था. So here the word umbrage is used. Why? Because a girl
Due to certain comments or due to certain remarks, she felt offended, she felt annoyed, and that's why we have used this word. Now, fifth word for today is uncanny. Uncanny is a very common word again. It's an adjective and it means weird, supernatural, much greater than one would expect from an ordinary human being. सो अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ तो अनकैनी का मतलब है बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है या इमेजिन नहीं की जा सकती कि ऐसा हो सकता है और वो हो रहा होता है, दैट इज़ अनकैनी. द फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ माइंड फॉर दिस वर्ड वुड बी यू मे बी यू हैव वॉच्ड द मूवी फगली फुगली राइट, फगली फुगली जो भी है. सो उसमें जो चूचा रहता है राइट, ही ड्रीम्स और वो ड्रीम रियलिटी में बदल जाता है. सो दिस इज समथिंग सुपर नेचुरल हैपनिंग in the movie, right? That supernatural thing can be termed as uncanny. I hope you get this. तो अब जब भी आपको वो मूवी देखोगे तो आपको ये वर्ड ज़रूर याद आएगा now, right? So let's see an example जो मैंने यहाँ पे mention किया है other than that one. The resemblance between the twins was uncanny. Even their closest friends struggled to tell them apart. ठीक है, तो ट्विंस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ फेशियल फीचर्स अलग होते हैं. बट देयर वाज अ केस जहाँ पे ट्विंस रिजेम्बलेंस जो था बिल्कुल सिमिलर था. और दैट इट्स अ वियर्ड थिंग टू हैपन राइट, जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक इंसान. सो दैट्स वाई द वर्ड अनकैनी इज यूज्ड हियर. ओके, मूविंग टू द sixth word of today, and that is unguent. Unguent is a noun and it means ointment, lotion, balm. So something which is used for healing or lubrication maybe can be termed as unguent. So the healer applied a soothing unguent to the warrior's wounds, hoping it would hasten his recovery. ठीक है, तो something which is used as an ointment, maybe a balm or a lubricant can be termed as unguent. So ये word मुझे भी नहीं पता था. I've also learned it while I was researching for all of it. So yeah, you can, I hope this was a great learning for you all also. Now, coming to the seventh word, and that is unilateral. It's a very common word. बहुत जगह यूज़ होता है, पॉलिटिकल डोमेन में बहुत यूज़ होता है ये. इट्स एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स वन साइडेड, ऑन वन साइड. मतलब सिर्फ एक व्यक्ति या एक ग्रुप या एक नज़रिए से देखी हुई चीज़ें, एक नज़रिए से बोली गई हुई चीज़ें, एक कोई इंसान कुछ डिसाइड करके बोलता है, दैट इज़ यूनिलेटरल, जहाँ पे हम बाकी एंगल्स बाकी लोगों को नहीं सुन रहे होते हैं. ठीक है, सो यूनिलेटरल का एग्जाम्पल देखते हैं. हर बॉस टुक यूनिलेटरल एक्शन टू रीस्ट्रक्चर द टीम विदाउट कंसल्टिंग एनीवन. मतलब वन साइडेड एकदम एक्शन लिया कि रीस्ट्रक्चर करनी है टीम. नो ओपिनियंस, नो व्यूज़ वो वेलकम्ड. सो दैट्स वाई द वर्ड यूनिलेटरल इज यूज्ड हियर. नाउ moving to the word unison. Eighth word is unison, which is a noun and it is a sound of the same pitch, complete agreement. तो basically these are two different meanings of the same word. तो जब भी कोई it's used in music, if it's used in music तो इसका मतलब same pitch same volume पे जब बहुत सारा ग्रुप जो होता है, ग्रुप सिंगिंग, तो उसमें 4-5-6 लोग जितने भी हैं वो एक पिच में एक वॉल्यूम में गा रहे होते हैं, दैट इज टर्म्ड एज यूनिसन. एंड सेकेंडली व्हेन टू और मोर देन टू पीपल आर इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद अ सिंगल व्यू और सिंगल ओपिनियन जो भी है, तो दैट इज यूनिसन. Let's see the example. During the protest, the crowd chanted slogan in unison, their voices echoing through the streets. Unison मतलब इकट्ठे एक पिच पे जब कोई स्लोगन बोल रहा है, नारे लगा रहा होता है, that can be termed as unison. Okay. Now, moving to the ninth word, and that is unwitting. Unwitting is an adjective which means unaware, without knowing or unintentional. जाने अनजाने में, we did not have any knowledge और गलती से कुछ हो गया सपोज, है ना, किसी चीज़ से हम अनअवेयर हैं, हमें नहीं मालूम है, दैट इज़ अनविटिंग. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द अनविटिंग टूरिस्ट वॉन्डर्ड इन टू अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ट्रिगरिंग अ सिक्योरिटी अलर्ट. अगेन मूवी से एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज़ बजरंगी भाईजान राइट. वो मुन्नी शी डिडंट नो, वो कहाँ से उस पार से इस पार आ गई और उसको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी. दैट्स वाई द वर्ड अनविटिंग कैन बी यूज्ड देयर राइट. तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड या दूसरे मुल्क में आ गई एंड दैट क्रिएटेड अ सिक्योरिटी अलर्ट और फिर उसके पीछे पूरी मूवी बनाई गई. सो द वर्ड अनविटिंग कैन बी यूज्ड हियर बिकॉज वो अनइंटेंशनल था, कुछ भी इंटेंशनल नहीं था वहाँ पे, और जो इंसान है उसको पता भी नहीं था, ही और शी वॉज अनअवेयर ऑफ इट. So that's why the word unwitting. So coming to the 10th word of today, and that is upbraid. Upbraid is a verb which means to scold, criticize, to reproach or chide. तो किसी को बहुत फटकारना, चिल्लाना, डांटना is termed as upbraid.
Now see, you have a very you know different word that you can use maybe, or it can be asked in your exam, which is to scold, डांटना, criticize करना, and that is upbraid. Let's see the example for it. In the meeting, the CEO upbraided the department heads for not meeting the quarterly targets. ठीक है, so upbraided मतलब scolded, chide करना ना, डांटना. So that is why the word upbraided is being used. Now, moving to the 11th and a very common word, and that is urbane. Urbane is a adjective. So it बहुत सारे लोगों को ये word पता होगा, but let's see the meaning. Pertaining to or influenced by a city, courteous, smooth mannered. तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंसान जो बहुत ही स्मूथ मैनर्ड है, पोलाइट है, courteous है, sophisticated है, they are termed as basically urban. Well educated लोग जो होते हैं, they can be termed as urban. और इसमें अर्बन का ये भी मतलब होता है पर्टेनिंग टू एसोसिएटेड विद सिटी लाइफ या अर्बन सिटीज़ बेसिकली, एंड दैट इज़ अर्बन. लेट्स सी द एग्जांपल. द मैगजीन फीचर्ड एन आर्टिकल ऑन अर्बन लिविंग highlighting the latest trends in city life and culture. Okay, that's a very very basic example I've taken here. Moving to the 12th word, and that is urchin. Urchin is a noun and which means a mischievous child or a child. So this word was basically used in 19th century. In historical documents this word is used, that is urchin. ठीक है, तो अभी ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, but still I have included it. The novel painted a vivid picture of a young urchin's life in the bustling city streets of the 19th century. ठीक है, तो अर्चिन का यहाँ पे मतलब हुआ अ चाइल्ड और मिस्चीवियस चाइल्ड और समवन हु इज़ पुअर लिविंग इन द स्ट्रीट्स. उन बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ होता था. नाउ मूविंग टू द 13th वर्ड, एंड दैट इज यूसर्प. यूसर्प इज अ वर्ब विच मीन्स टू सीज, टू टेक पोजिशन ऑफ बाय फोर्स विदाउट राइट और अनजस्टली. तो किसी चीज़ को हड़पना, किसी चीज़ को अपने काबू में लेना, किसी चीज़ का पोजिशन ले लेना, नॉट जस्टिसली नॉट जस्टली बट अनजस्टली. ठीक है, जहाँ पे आपका कोई राइट नहीं है, इलीगल तरीके से आप किसी चीज़ को हड़प रहे हो, किसी चीज़ को पोजीशन किसी चीज़ का ले रहे हो, दैट कैन बी टर्म्ड एज usurp or usurp. I have to check it, the pronunciation, or even you can check it at your end. So this is what is meant by this particular word. Now the lawyer argued that the government should not usurp the powers granted to local authority. Usurp means should not seize or should not stop or should not take possession of the powers that are granted to the local authorities at a very local level. Now 14th word for today, and that is sari. Sari is a noun which means the taking of interest on a loan or interest basically. ठीक है, तो समथिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, बी इट एफ डी, बी इट एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बी इट गिविंग लोन टू अ फ्रेंड एंड टेकिंग इंटरेस्ट ऑन इट, दैट कैन बी टर्म्ड एज सरी. So let's see an example for it. Many religious texts explicitly prohibit usury, emphasizing fair treatment in financial transactions. Right? So I've heard this from my friend too, जिसमें they don't invest in फाइनेंशियल जो अपनी होती है एफडी वगैरह, है ना, वो क्या बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, बट दे डोंट टेक द इंटरेस्ट रेट देयर बिकॉज उनका एक ये रिलीजियस टेक्स्ट में ये मेंशन्ड है एंड दे डोंट टेक इट. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव मेंशन्ड है. तो इंटरेस्ट रेट्स प्रोहिबिट रहते हैं उसमें, इंटरेस्ट जो होता है वो अवॉइड करते हैं वो लोग. सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट है. Okay, the 15th word and the last word for today, and that is utopia. Utopia is a noun. Again, it's a very common word जो मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी and I thought कि इसको include करना चाहिए because काफ़ी जगह ही आता है. So it means any real or imaginary state or place believed to be ideal, perfect, excellent. तो कोई भी ऐसी place या कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसा situation या कोई भी ऐसा इंसान जो एक इमेजिनरी या रियल है, जो बहुत ही आइडियल या परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर में यूज़ किया जा सकता है, या फिर एक परफेक्शन है उसमें, किसी चीज़ की बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल जो हम हर तरीके से हमें परफेक्ट लगे, दैट कैन बी टर्म्स एज यूटोपिया. लेट्स सी द एग्जाम्पल.
Building a utopia requires not just idealistic visions but also practical solutions to address the complexities of ह्यूमन नेचर. तो बिल्डिंग अ यूटोपिया मीन्स एक कुछ परफेक्ट, एक कुछ बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ बनाना. ठीक है, उसमें एक विजन बस की नहीं बट एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज ह्यूमन नेचर हैज़ सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटीज, तो उसको एड्रेस करने के लिए. So this was the meaning of utopia. I hope you enjoyed these 15 words today. So today I have not mentioned assignment part for you. If you find any other interesting words that start with the letter U, then you can definitely comment down so that I can read, I can learn from there. So yeah, I hope you enjoyed. I hope you had a great learning. So thank you for watching, making it till here. And yes, please like, share it with your friends, subscribe to the channel if you want more such videos. Till then, we'll meet in the next session. Till then, happy learning, stay safe, take care.